Till now we have seen integration by adding the function, subtracting the function, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं था. तो जब दो फंक्शंस है u and v and they are getting multiplied to each other, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा? तो उसमें हम लोग u को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d dx of u into integration v dx dx. Now how to decide u? U is any term which comes first in this area, logarithmic, algebraic, exponential. तो अगर कोई आपका सीक्वेंस ऐसा है जिसमें लोगैरिथमिक और अल्जेब्रिक है, तो लोगैरिथमिक आपका u होगा. अगर अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है तो अल्जेब्रिक विल बी योर u. ओके, तो इसी ऑर्डर में होगा. एक्चुअली ये रूल पहले होता था लिएट, इसको लिएट कहा जाता था. Logarithmic, inverse, algebraic, trigonometric, exponential. But because now we don't have inverse and trigonometric function, now the rule is LAE, logarithmic, algebraic, exponential. Once you know what is u, put it here and you can find out your by parts integration. Let us take an example to understand this. Exercise 5.5, question number 1. इंटीग्रेशन x log x dx. अब इसमें दो फंक्शंस है, एक है x, एक है log x. इसमें से u कौन होगा और v कौन होगा? log x जो है वो लोगैरिथमिक है, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, क्योंकि ये अलजेब्रिक है. और एक्सपोनेंशियल वाला क्या होता है? e raised to x, a raised to x, ये वाले एक्सपोनेंशियल होते हैं. So now it will be integration x log x dx will be log x, because the formula for by parts is u integration v dx. So log x integration x dx minus integration d dx of u क्या है? log x into integration x dx dx. This will be log x. What is integration of x? X square by 2 minus integration. What is derivative of log x? 1 by x into integration of x is x square by 2 dx. This will be x square log x by 2. This x and this will get cancelled. Minus 1 by 2 integration x dx. This will be x square log x by 2 minus 1 by 2 integration x dx is nothing but x square by 2 plus c. This is x square log x by 2 minus x square by 4 plus c. This is your answer. This is integration by parts. ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स फंक्शन जब होते थे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था. अब ये बहुत ही इजी है. अगर लोगैरिथमिक और अलजेब्रिक है तो लोगैरिथमिक u हो जाएगा, v हो जाएगा आपका अलजेब्रिक, एंड यू विल जस्ट पुट देम इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट योर आंसर. Let us take the second example. Second example of 5.5 is integration x square e raised to 4x dx. यहाँ पे x square जो है ये algebraic function है. This is algebraic. And e raised to 4x is exponential. तो ये अब अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में LAE रूल से ये u हो जाएगा और ये हो जाएगा v. तो ये होगा इंटीग्रेशन
x square e raised to 4x dx. Now see 4x is composite also. तो composite का derivative divide हो जाता है. This will be x square integration e raised to 4x dx minus integration d dx of x square integration e raised to 4x dx. ये होगा x square. E raised to 4x will be e raised to 4x upon derivative of 4x is 4 minus integration x square will be 2x and this is e raised to 4x upon 4 dx. अब ये 2 तो हम लोग बाहर ले लेंगे. So it will be x square e raised to 4x upon 4 minus 2 integration. Inside you again have x e raised to 4x dx. Now this is again by parts because this is again two functions are getting multiplied. तो हम लोग इसको तो वैसे ही रखेंगे लेकिन अंदर हम लोग वापस बाय पार्ट्स करेंगे. तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा x इंटीग्रेशन e raised to 4x dx माइनस इंटीग्रेशन d dx of x integration e raised to 4x dx. This is x square e raised to 4x by 4 minus 2 x e raised to 4x upon 4 minus integration. This is d dx of x, that is 1. This is e raised to 4x. Integration of e raised to 4x क्या हो जाएगा? e raised to 4x upon 4 dx. ये होगा x square e raised to 4x upon 4 minus 2 x e raised to 4x upon 4 minus 1 by 4. Integration of e raised to 4x is again e raised to 4x upon 4. You may just multiply this inside and you will get your answer. सर ये 2 by 4 है बाहर तो ये 1 by 2 हो गया. This is 1 by 2. Now if you expand this is x square e raised to 4x upon 4 minus you will multiply this inside x e raised to 4x upon 8 minus minus will become plus e raised to 4x upon this is 16 twos are 32 plus c. This is your answer. You can take e raised to 4x common or you may keep it as it is. This can be written as your answer. कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है वैसे ही रखा तो भी चलेगा. एन एक्स्ट्रा सम ये टेक्स्ट बुक का नहीं है 5.5 लेकिन मैं ऐसे ही दे रही हूँ. ये सपोज वी हैव इंटीग्रेशन log x dx. अब इंटीग्रेशन 1 by x dx का तो log x आता है लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या है तो उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है. इसे हम लोग बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे. इंटीग्रेशन log x का मतलब होता है log x into 1 dx. यहाँ पे 1 हो गया लोगैरिथम 1 हो गया अलजेब्रिक और log x क्या हो गया है लोगैरिथमिक. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log x into 1. Your u is 1 and sorry u is log x and v is 1 क्योंकि log x u हो जाएगा and 1 is v because it's logarithmic and algebraic. So integration log x dx is equals to log x integration 1 dx minus integration d dx of 1 into integration
d dx of log x into integration 1 dx dx. अब ये हो जाएगा log x, 1 का इंटीग्रेशन है x माइनस ये होगा 1 बाय इंटीग्रेशन 1 बाय x और 1 का इंटीग्रेशन है x dx. This is x log x minus integration 1 dx. This is x log x minus x plus c. This is our answer. अगर हम लोगों ने u और v को कुछ भी अलग ले लिया तो वो आपका आंसर आएगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन आता ही रहेगा बार बार. ओके, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको u ले रहे हो, किसको v ले रहे हो. सिर्फ log x है तो हमको पता ही नहीं है क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है सिर्फ log x के इंटीग्रेशन का, तो हम लोग उसे log x into 1 ले लेंगे. तो log x is u, v is 1. Integration log x dx is log x integration 1 dx minus integration d dx of log x, sorry, derivative of log x into integration 1 dx और इसका पूरा इंटीग्रेशन. अब ये log x into x minus 1 by x and this is x, x cancel. कारण 1 चा इंटीग्रेशन x है आणि log x चा डेरिवेटिव 1 by x है. Now integration of 1 is x. This is your answer. ऐसे ही अगर उन्होंने हमको कुछ और ऐसे सम्स दे दिए थोड़े से अलग, तो वी शुड नो व्हाट टू ट्रीट u, व्हाट टू ट्रीट v. एक बार वो आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. सपोज इस तरह का सम आ गया, log of log x अपॉन x dx. अब इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? मैं अगर इस log x को कॉम्पोजिट फंक्शन को if I put t, I will get 1 by x is equals to dt by dx. So dx by x is equals to dt. So I can write down this integration log of log x upon x dx as integration log t dt. Now this is nothing but integration log t into 1 dt. Now you can treat log t as u integration 1 dt minus integration d dt of log t 1 dt. So ये हो जाएगा t log t minus integration log t चा डेरिवेटिव आहे 1 by t into 1 का इंटीग्रेशन आएगा t dt, ये कैंसल, t log t minus integration 1 dt. This is t log t minus t plus c. Now what is t? T is log x. So log x log of log x minus log x plus c. This is your answer. अगर ऐसे ही कोई और सम उन्होंने दे दिया, सपोज इंटीग्रेशन x 2 raised to 3x dx, तो वापस x is algebraic and 2 raised to 3x is exponential, so x will be u. So by parts it will be x 2 raised to 3x dx minus integration d dx of x into integration 2 raised to 3x dx dx. x 2 raised to 3x, 3x composite है तो 3 का उसका डेरिवेटिव डिवाइड होगा माइनस इंटीग्रेशन d dx of x is 1 into 2 raised to 3x will again become 2 raised to 3x upon 3 dx. So x 2 raised to 3x upon 3 minus 1 by 3 integration 2 raised to 3x dx. This will be x 2 raised to 3x upon 3 minus 1 by 3 integration 2 raised to 3x. This will be 2 raised to 3x upon 3 plus c.
This is x2 raised to 3x upon 3 minus 2 raised to 3x upon 9 plus c. This is your answer. तो इस तरह से हम लोग बाय पार्ट्स के सम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. हमको कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई. ये 5.5 का नेक्स्ट सम है. थर्ड. Let us see how to do this. Integration x square e raised to 3x dx. अब इसमें x square जो है वो अल्जेब्रिक होने की वजह से u होगा और e raised to 3x ये एक्सपोनेंशियल होने की वजह से v हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन x square e raised to 3x dx will be x square integration e raised to 3x dx minus integration d dx of x square into integration e raised to 3x dx dx. x square e raised to 3x का इंटीग्रेशन आएगा e raised to 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन x square का डेरिवेटिव आएगा 2x e raised to 3x upon 3 dx. This is x square e raised to 3x by 3 minus 1 by 3. एक्चुअली ये 2 by 3 हो जाएगा. इंटीग्रेशन x e raised to 3x dx. This is x square e raised to 3x by 3 minus 2 by 3. अब इन दोनों का इंटीग्रेशन वापस इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा बाय पार्ट्स की तरह. अब ये वापस x u है e raised to 3x dx minus integration d dx of x integration e raised to 3x dx dx. So this is x square e raised to 3x by 3 minus 2 by 3 that is x e raised to 3x by 3 minus integration d dx of x is 1. Integration of e raised to 3x will become e raised to 3x upon 3 dx. This will be 1 e raised to 3x upon 3 dx. So this is x square e raised to 3x by 3 minus 2 by 3 x e raised to 3x by 3 minus 1 by 3 integration e raised to 3x will be e raised to 3x upon 3 whole thing plus c. If I multiply this inside, x square e raised to 3x upon 3 minus 2x e raised to 3x upon 9 minus this is 3 into 3 into 3, so it will be 2 e raised to 3x upon 27. And this is plus c. This is your answer. जब ये x है x स्क्वायर है तो ये थोड़ा सा बड़ा बन जाता है. जब ये सिर्फ x होता है तो फिर हमको सिर्फ इतना ही आंसर मिलेगा जितना ये ब्रैकेट में.